Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे Skill Up English for the Grade 4 का यूनिट नंबर 4 and the title of unit is Avoid befriending a stranger. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले I would like to ask a question कि स्ट्रेंजर कौन होता है। तो डियर टीचर्स हमेशा याद रखिएगा और अपने स्टूडेंट्स को भी बताइएगा कि स्ट्रेंजर इज़ अ पर्सन whom we don't know। एक ऐसा इंसान जिसको हम नहीं जानते उसको हम स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी कहते हैं। हमें चाहिए कि हम अजनबी लोग जितने भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं हम उनसे अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करना ज़रूरी है? क्योंकि हमें नहीं पता वो हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ख़ासकर अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि अजनबियों के साथ कहीं जाए ना, उनसे कोई चीज़ लेकर, ख़ासकर कैंडी, टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह। बच्चे क्योंकि इन चीज़ों के ज़रा शौकीन होते हैं, दे लाइक दैट टाइप ऑफ थिंग्स, तो ये उनसे मत लें और अवॉइड करें। अब हम देखेंगे स्टोरी में क्या है। अवॉइड बी फ्रेंडिंग अ स्ट्रेंजर, ये हमें एक मैसेज दे रही है कि अजनबियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि एक आदमी ने, एक अडल्ट ने एक अजनबी की मदद की थी तो उसने उसके को कैसे रीपे किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। One day, the king disguised himself as an ordinary person and set off on horseback to find out how well his kingdom was being run. On the way, he came across an old lame stranger by the side of the road. "Assalamu alaikum," said the stranger. "I am on my way to Basra. Let me ride with you." So the king helped the stranger up onto the horseback. When they reached Basra, the king asked the stranger to get off the horse, but the stranger refused. "Get off yourself," he said. "In Basra, we are both strangers. No one knows whose horse is this, and it will be your word against mine." The king wondered what he should do. "If I throw the stranger off the horse," he thought, "he will make a big fuss, a crowd will gather, and people will tell me to give the old man his horse back. If I give the stranger money, I might get my horse back, but the old man might cheat someone else in the same way. If I ask a judge to decide the matter, I may lose my horse, but at least I will find out how well the judge of the Basra does his job." And so the king and the stranger went to see the judge of Basra. "Your honor," said the king, "I am a traveler from a faraway country. A few miles outside your city, I met this lame stranger. I took pity on him and brought him into the city on my horse. He now claims that my horse belongs to him." The judge turned to the stranger. "What have you got to say?" he said. "This horse is mine," answered the stranger. "I am just a poor lame old man. If you take my horse away from me, I don't know what I shall do." The stranger pretended to cry. "Leave the horse with one of my soldiers and return to this courtroom tomorrow morning." The next morning, the judge said to the stranger, "Why have you repaid this man's kindness with ingratitude?" The judge then turned to the king. "Good traveler, the horse is yours. Take it and continue your journey." "Your judgment is excellent," said the king, "but how could you tell who owned the horse? Last night I put your horse in a stable that you and the stranger would have to pass on your way to the court today. This morning I went to the stable. When the stranger passed, the horse didn't look up. But when you passed the open door, he stretched out his head and neighed as horses only do when their master approaches. So you see, the matter was very simple after all." "Simple?" cried the king. "You are the wisest man I have ever met. I am the king. I need a man like you in my capital city. I shall make you the grand judge." Now difficult words की मीनिंग भी साथ देखते हैं, देन हम देखेंगे उर्दू ट्रांसलेशन। किंग बेसिकली कहते हैं वक्त के बादशाह को, जो एक अवाम के ऊपर, एक कौम के ऊपर हुकूमत कर रहा होता है। डिस्गाइज, अजनबी का भेस बदलना, दूसरा भेस बदलना, अपनी असल पहचान को छुपाना। फार अवे, बहुत दूर से आना। प्रिटेंड करना, यानी कि आपने एक गलत अपीयरेंस देना, दिखावा करना। इनग्रैटिट्यूड, आपने यानी कि ग्रेटफुल ना होना, किसी का शुक्रगुजार ना होना। अप्रोच, तरीका, कम अक्रॉस।
आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।